Morning to one and all class 12. This is the second video of chapter number 5, Should Wizard Hurt Mommy, from your chapter, from your book Vistas, class 12. So today we'll start our chapter from here, this paragraph. So previously we have read that Roser, Jo closed her eyes tightly and smiled as if she was like thinking, because again रोज़र को वो लोग आगे नाम देके और उसमें स्टोरी में कोई ना कोई वेरिएशन करके उसको सुनाने वाले होते हैं. बट देयर टुडे देयर इज एन एनिमल हुज नेम इज लाइक स्कंक. तो रोज़र skunk is like an animal which color is black and white somehow, and it is an animal which stink so badly, or फ्लूइड काइंड ऑफ कुछ ऐसा उसकी बॉडी में से जो है निकलता रहता है, जिसकी वजह से इट स्मेल्स वेरी बैड. सो ऐसा एनिमल्स, दिस काइंड ऑफ skunk animal जनरली, these kinds of animals lives in America. So here a new animal, skunk, was common animal among the students of nursery classes, and Jack was excited momentarily to hear the name of new hero and experiment with the story. So let's read. Yes, Joe said he smelled so bad that none of other little woodland creatures would play with him. Joe looked him solemnly. She hadn't foreseen this. Whenever he would go out to play, Jack continued with zest, remembering certain humiliations of his own childhood. Of all of the other tiny animals would cry, "Oh, here comes Roser Stinky Skunk," and they would run away, and Roser Skunk would stand there alone, and two little round tears would fall from his eyes. The concerns of Joe's mouth dropped down, and her lower lip bent forward as he traced with a forefinger along the side of her nose the course of once Roser skunk tears. "Won't he seize the owl?" she asked in a high and faintly roughened voice, sitting on the bed beside her. Jack felt the covers tug as her legs swished tensely. He was pleased with this. So here in the story, yes, Joe said that the smell that come from his body was so bad, and that all the other creatures of the forest avoided playing with him. So सारे creatures उसके साथ खेलने से मना कर देते थे, because of what? उसकी bad smell के कारण. So Joe looked at him solemnly. She was not expecting this. जो ने उसकी तरफ देखा, जबकि वो ऐसा कुछ expect नहीं कर रहे थे. Whenever he came out of his home to play with other creatures, जब वो अपने घर से बाहर निकलता था दूसरे creatures के साथ खेलने के लिए, Jack was telling with zest, remembering those humiliating moments of his own childhood. ये स्टोरी सुनते सुनते जैक को अपने चाइल्डहुड के कुछ ऐसे ह्यूमिलेटिंग मोमेंट्स याद आ गए. ऑल द अदर टाइनी क्रिएचर वुड टॉन्ट हिम सेइंग, ओ, दूसरे क्रिएचर उसे टॉन्ट करते थे और चिढ़ाते थे, हियर कम्स रोजर स्टिंकी स्कंक. देखो, रोजर स्टिंकी बदबू वाला स्कंक एनिमल आ गया, एंड दे डिड नॉट कम क्लोज टू हिम. और वो सारे एनिमल्स उसके क्लोज नहीं जाते थे. ही वुड स्टैंड देयर अलोन, एंड देयर वर टू लिटिल राउंड टीयर्स इन हिज आइज. वो वहीं खड़ा रहता था और उसकी आंखों से टीयर्स बहते रहते थे. द कॉर्नर्स ऑफ जो माउथ हैड्स ड्राइड, एंड हर लिप bent forward as he saw on face Joe near her nose and a drop of tear. और उसे फिर वहाँ पर एक आंसू की बूंद दिखाई देती है. Won't he look for the owl for help? क्या इस बार उसने आउल को नहीं बुलाया हेल्प के लिए? She asked in a highly and faintly ruffled voice. So जो अपने फादर से पूछती है. जैक, who was sitting beside her on the bed, realized. जैक, जो कि उसका भाई, जो कि 2 years का है, वो उसके पास में बैठा है, that cover had tugged because she was switching her legs in tension. कवर उसने टक कर लिया क्योंकि वो अपने लेग्स को स्विच कर रही है टेंशन में. He felt happy in this moment. वो हैप्पी फील कर रहा है. He was telling her something true that she must be told, so did not want to finish soon. ऐसा कुछ उसे लग रहा था, इसलिए वो चाहता नहीं था जल्दी सब कुछ ख़त्म हो या स्टोरी ख़त्म हो. But he heard a chair being scrapped downstairs. लेकिन उसे डाउनस्टेयर्स में एक चेयर स्क्रैप करने की आवाज़ आ रही थी, एंड ही थॉट ही मस्ट बी देयर टू हेल्प क्लेयर
Claire paint the living room woodwork, और उसे लग रहा था कि वो क्लेयर पेंट की मदद करेंगे लिविंग रूम का जो उनके वुडवर्क चल रहा है उसके लिए. So let's move on to the next page, students. So he was telling some other things and something she must know and had no wish to hurry on, but downstairs a chair scraped and realized that he must down to help clear paint the living room woodwork. And I have already told you that but he had heard a chair being scrapped downstairs. उसे क्या सुनाई दे रहा था कि downstairs पे एक chair को scrap किया गया. So he thought he must be there to help. उसे लगा वहाँ होना चाहिए उसे उस वक्त हेल्प के लिए. क्लेयर पेंट द लिविंग रूम वुडवर्क. क्लेयर जो है वो लिविंग रूम के वुडवर्क को कर रहा है. वेल ही वॉक्ड he walked along very sadly and came to a very big tree, and in the tip top of tree was an enormous wise old owl. Good Mr. Owl, Roser Skunk said, all the little animals run away from me because I smell so bad. So you do, the owl said. Very, very bad. What can I do? Roser Skunk said, and he cried very hard. The wizard, Joe shouted and sat right up, and the little golden book spilled from the bed. Now, Joe, Daddy telling the story. Do you want to tell Daddy the story? No, you me. Then lie down and be sleepy. Her head relapsed onto the pillow and she said, out of your head. Well, the owl thought and thought. At last he said, why don't you go see the wizard? Daddy, what? So here in the story, what's going on, students, that again the same thing happens, that जो स्टोरी है उसमें कोई ना कोई वेरिएशंस थी एंड द सेम थिंग्स हैपन विद इट. दैट वेल ही मूव्ड अहेड लाइक फीलिंग वेरी सैड और स्टॉप्ड बाय अ बिग ट्री एंड ही सॉ एन एनॉर्मस आउल. जब वो एक एनॉर्मस आउल देखते हैं एंड उस आउल में वो क्या देखते हैं, ऑन द टिप टॉप ऑफ द ट्री के टिप टॉप पे, तो वो क्या बोलते हैं, गुड मिस्टर आउल आ गए स्टोरी में. सो रोजर स्कंक सेड टू हिम, रोजर स्कंक उनसे क्या कहता है कि ऑल द अदर टाइनी क्रिएचर्स फाइंड मी स्टिंकी. सारे टाइनी क्रिएचर्स मुझे क्या समझते हैं, स्टिंकी. एंड डू नॉट कम क्लोज टू मी, इसलिए वो मेरे पास नहीं आती है. ड्यू टू माई स्मेल, मेरी इतनी गंदी बदबू के कारण. द आउल सेड यू आर रियली स्मेलिंग वेरी बैड. तो सेम चीज़ आउल भी कहते हैं कि येस तुम में से बहुत गंदी बदबू आती है. व्हाट डू आई डू, रोजर स्कंक एंड वेप्ट बिटरली. वो रोजर स्कंक को कहता है अब मुझे बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ. द विजर्ड जो शाउटेड. तो बिकॉज वो स्टोरी वो डेली सुनते तो उन्हें क्या पता होता है कि अब उसके डैडी बोलने वाले हैं कि आउल डेफिनेटली उसको क्या सजेशन देगा कि तुम्हें विजर्ड के पास जाना चाहिए. तो इसीलिए वो पहले से ही जो चिल्लाने लग जाता है, दैट विजर्ड सेट राइट अप एंड अ लिटिल गोल्डन बुक फेल डाउन फ्रॉम द बेड. वो कहते हैं कि यहीं बैठे रहो और एक बेड पे गोल्डन बुक गिर जाती है. नाउ जो आई एम टेलिंग यू स्टोरी, डू यू वांट टू टेल मी द स्टोरी. जो तो फादर कहते हैं कि जो क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊँ. नो आई वॉन्ट टू लिसन द स्टोरी. नहीं मैं सुनना चाहता हूँ. देन लाई डाउन एंड ट्राई टू स्लीप. तब तुम्हें लेटना पड़ेगा और कोशिश करो सोने की. शी अगेन प्लेस्ड हर हेड इन टू द पिलो एंड सेड टेल मी योर स्टोरी. वो अगेन अपना सर जो है पिलो पे रखती है और बोलती है टेल मी योर स्टोरी, आपकी स्टोरी बताए. वेल द आउल contemplated and finally said you should go to the wizard. आउल अगेन वही कहता है कि अब तुम्हें विजर्ड के पास जाना चाहिए. डैडी वॉट, आर मैजिक स्पेल्स रियल. This was a new phrase just this last month, a really phase. When he told her spiders eat bugs, she turned to her mother and asked, do they really? And when Claire told her God was in the sky and all around them, she turned to her father and insisted with a sly yet eager smile, is he really? They are real in stories, Jack answered curtly. She had made him miss a beat in the narrative. The owl said, go through the dark woods, under the apple trees, into the swamp, over the creek. What?
what's a crick? So your do magic spells really happen? So अब वो क्या सवाल पूछते हैं, what daddy, क्या मैजिक स्पेल्स सच में होते हैं? दिस वॉज अ न्यू फेज, ये स्टोरी में एक नया फेज था. जस्ट दिस लास्ट मंथ इट रियली हैपेंड, क्या ये अभी हुआ है? व्हेन शी टोल्ड बाय हिम दैट स्पाइडर्स ईट बग, जब उसने उन्हें बताया था स्पाइडर बग को खा जाते हैं. सो शी अप्रोच्ड हर मदर एंड इंक्वायर्ड इफ इट वॉज ट्रू, वो अपनी मदर को अप्रोच करती है और पूछती है उनसे क्या ये सच है. एंड व्हेन क्लेयर her about God that he lived in the sky and was present everywhere, और वो उसे जब ये बताती है कि गॉड जो है वो आसमान में रहते हैं और सब जगह हैं. सो शी अप्रोच हर फादर एंड आस्क्ड विकेड बट ईगर स्माइल, तो वो अपने फादर से पूछती है एक विकेड और ईगल स्माइल के साथ कि क्या ये सब सच है. इज इट ट्रू? इन स्टोरीज दे रियली एग्जिस्ट, स्टोरीज में तो विजर्ड सच में होती हैं. जैक आंसर्ड रफली, तो जैक ऐसी रफली बोलता है. ड्यू टू दिस ही हैड लेफ्ट अ पोर्शन ऑफ द स्टोरी, और इसके कारण स्टोरी का कुछ पोर्शन छूट जाता है. दे एडवाइज हिम टू गो थ्रू द डार्क फॉरेस्ट, और उसे क्या एडवाइस करते हैं, डार्क फॉरेस्ट में जाओ. अंडर द एप्पल ट्रीज में, इनटू द स्वैम, ओवर द क्रिक. अब वो उससे सवाल पूछता है व्हाट्स अ क्रिक. सो स्टूडेंट्स, we'll continue the next part of our video in our next remaining pages of our video in our next video. Thank you. Till then, stay safe all of you.